Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to my very dear students. So today we will discuss about the important MCQs of chapter biotechnology. MCQ number 1, recombinant DNA contain DNA from. So यहाँ ये पूछा हुआ है कि recombinant DNA टेक्नोलॉजी में DNA कितनी सोर्सेज से लिया जाता है, two same sources या three same sources. So here the right answer is A. MCQ number 2. First restriction enzyme was isolated by. The right answer is Hamilton O. Smith. The restriction enzyme that was first isolated by Hamilton O. Smith. B is the right answer. MCQ number 3. Commonly used restriction enzyme is. Commonly जो restriction enzyme use किया जाता है, that is ECORI. C is the right answer. MCQ number 4. Natural extra chromosomal circular DNA molecules carrying genes for antibiotic resistance and fertility. A. Recombinant DNA, chimeric DNA, lambda phase या plasmid. तो हमेशा जो circular DNA होता है, that is a plasmid DNA, right? D is the right answer. MCQ number 5. The enzyme which seal the foreign DNA into the vector is DNA ligase. Ligase is used for the sealing purpose. C is the right answer. MCQ number 6. Chimeric DNA is also known as recombinant DNA. A is the right answer. Lambda phase is virus. Lambda phage is a virus. A is the right answer. MCQ number 8. A genomic library is the collection of bacterial clones, bacteriophage clones, viral clones. तो both A and B is the right answer. Bacterial clones भी होते हैं और the virus which affected the bacteria वो bacteriophage के clones भी होते हैं. तो D is the right answer. MCQ number 9. A single strand nucleotide sequence that will hybridize into a certain piece of DNA is. एक न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस से आप अगर एक डीएनए का पीस अलग कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड प्राइमर एंड प्रोब. इन्हें प्राइमर भी कहा जाता है, प्रोब भी कहा जाता है. तो 9 का आंसर है डी. डी इज द राइट आंसर. एमसीक्यू नंबर 10. डीएनए एनालिसिस इज डन टू diagnose viral infection, identify criminals, determine evolution, या all of these. In the D, all of this, D is the right answer because DNA analysis सब में help out करता है. MCQ number 11. A method of DNA sequencing in which the DNA threads are chemically cut into a piece of different size is. इस method को क्या कहते हैं जिसमें DNA को छोटे छोटे pieces में cut किया जाता है? That is called Maxam-Gilbert method. B is the right answer. Human genome is dash time larger than any other genome. 25 times larger than any other genome sequence so far. C is the right answer. Organisms that have let a foreign gene inserted into them are. Organisms की बात हो रही है तो that's mean they are called transgenic organisms. बाकी ट्रांसफॉर्म्ड भी नहीं है, ट्रांसफिग्यूर्ड भी नहीं है, रिकॉम्बिनेंट ऑर्गेनिज्म भी नहीं है. MCQ number 14. Some transgenic bacteria produce a dipeptide sweetener called NutraSweet. D is the right answer. MCQ number 15. Transgenic plant are produced when foreign gene are introduced into a plant. सभी बनते हैं जब foreign gene को introduce कराया जाता है in a immature plant embryo. B is the right answer. MCQ number 16. Protoplast are plant cells from which a cell wall are removed, nucleus is removed, new organelles are added या vacuoles are taken out. तो प्रोटोप्लास्ट उन प्लांट सेल्स को कहा जाता है जिनमें से सेल वॉल्स को रिमूव कर दिया जाता है. A is the right answer. MCQ number 17. An antibody made by soya bean
can be used to treat genital herpes. D is the right answer. MCQ number 18. In vortex method of transgenic animal, gene is inserted into the egg. ट्रांसजेनिक एनिमल में जब वॉटेक्स मेथड के थ्रू जीन इंसर्ट किया जाता है तो वो किस में इंसर्ट किया जाता है? एग में इंसर्ट किया जाता है. एमसीक्यू नंबर 19. फॉर बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट विच इज प्रीफरेबल vehicle, urine is preferable vehicle for biotechnology products. A is the right answer. Two methods for gene therapy are ex vivo and in vivo. B is the right answer. MCQ number 21. In cystic fibrosis, patient lack a gene for the transmembrane carrier of the magnesium ion, calcium ion, cholesterol, या chloride. Chloride ion is the right answer. So patient lack a gene for the transmembrane carrier of the chloride ion. D is the right answer. MCQ number 22. Plasmid do not carry gene for antibiotic resistant fertility. Antibiotic भी होता है, fertility भी होता है, growth नहीं होता. So C is the right answer. MCQ number 23. Full set of gene of an individual is called genome. D is the right answer. MCQ number 24. Transgenic bacteria are produced in a large vats called. ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया कहाँ पे बनाए जाते हैं? बायोरिएक्टर में बनाए जाते हैं. सो सी इज द राइट आंसर. एमसीक्यू नंबर 25. Which of the following is correct about SCID, common in children as well as in adult? No, it is an autoimmune disorder. So B is the right answer. MCQ number 25, B is the right answer. MCQ number 26. Tissue culture does not involve growth of tissue in artificial medium, asexual reproduction, use of meristem, या use of generative nucleus in a pollen culture. A, B, C तीनों method involved है, but use of generative nucleus in the pollen culture is not involved in the tissue culture. MCQ number 27. Plants are totipotent. Why? Because each cell has full genetic potential of the organism. No. A single cell could become a complete plant. Yes. B is the right one. Both A and B, because they have lesser potential for tissue culture. So B is the right answer. MCQ number 28. Coconut milk contain the plant protein. Which plant protein? Cytokinins. MCQ number 29. Which of this is a true statement? Both plasmid and virus can serve as a vector. Yes. Plasmid can carry recombinant DNA, but virus cannot. Wrong है ये. Vector carry only the foreign gene into the host cell. No. Only gene therapy use vector. No. So A is the right answer, जिसमें plasmid and virus both serve as a vector. MCQ number 30. Which of these would you not expect to be a biotechnology product? वैक्सीन तो बनती हैं, डीएनए प्रॉब्स भी बनते हैं, प्रोटीन्स भी बनते हैं, बट स्टीरॉयड हार्मोन्स नहीं बन सकते बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट से. एमसीक्यूज नंबर 31. विच ऑफ दीज इज इनकरेक्टली मैच्ड? प्रोटोप्लास्ट प्लांट सेल इंजीनियरिंग, ठीक है, ये इसी में इन्वॉल्व होता है. रिफिल डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, यस, ये टेक्निक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में इन्वॉल्व है. डीएनए पॉलीमरेज पीसीआर, यस, पीसीआर के मेथड में डीएनए पॉलीमरेज यूज हो. डीएनए लाइगेज मैपिंग ह्यूमन क्रोमोसोम, नो, बल्कि लाइगेज इज एन एंजाइम व्हिच इज यूज्ड टू seal the DNA. So D is the right answer. So students, ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs ऑफ चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी. उम्मीद है कि आपको कुछ नोहा हुई होगी कि बायोटेक्नोलॉजी के MCQs किस टाइप के आ सकते हैं.
और आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आप कोई चैप्टर के चाहते हैं कि मैं एमसीक्यूज की वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।